Hello folks, a very good morning to all the viewers who are watching my video at present. I am from the team of Mission IS Learn with Integrity. So in this video which I am going to post is all about the ending date of Agniveer in Indian Navy. So ending date will be of 30 July. Okay, so 30 July is very nearer. So I really request you all to apply as soon as possible. मैं सभी को अनुरोध भी कर देता हूँ कि 30 जुलाई लास्ट डेट है अग्निवीर स्कीम के लिए इंडियन नेवी में ज्वाइन होने के लिए. तो फिर बहुत देर मत कीजिए, अप्लाई कीजिए और you will be definitely in with my enhancing with my heartfulness. I am even been saying that you will be getting the post whenever you are going to apply with full of dedication to the work which you are going to do with your own confidence. Okay, so that is what actually the Agniveer scheme is all about. That is all about Indian Navy har kaam desh ke naam. So this in this analysis or in this job posting, Indian Navy is inviting online application for the unmarried male and unmarried female candidates for Agniveer MR 1 2022 batch. So here are the different criteria which is already been published by Indian Navy. Okay, so before that I usually want to have my advertisement that please subscribe the channel, like the channel, share the channel as soon as possible, because the job is very important and crucial when we discuss about online application for soldiers who are going to sacrifice their we can say that sacrifice their whole life for serving the country. So this online application is all about the Agniveer scheme in Indian Navy. So education qualification is just to have matriculation examination from the board of school of secondary or higher secondary, we can say that we can board of school of education recognized by Ministry of Education. So according to the age, he or she must be born on 1st December 1999 to 31st of May 2005. Okay, so both data are inclusive. Job specification is just of Mr. MR Chef, MR Sweden and MR Hygienist are available for Indian Navy. Okay, as of now. So material status should be unmarried. So terms and duration of the we can say that job profile is just about 4 years. Okay, so according to the act which has been passed by Indian Navy under the act of 1957, and which usually distinct Agniveer would form a distract rank in Indian Navy different from any other existing ranks. Okay, so leaves all about 30 days leave per year shall be applicable for Agniveer. Okay, where the pay allowance will be 30,000 per month with fixed year increment. Okay, so then after it is also been analyzed according to the first, second and third year and fourth year schemes. Okay, तो इसमें ये भी बताया गया कि कितना स्कीम यूजुअली मेंटेन किया करता है और कितना इंक्रीमेंट हो सकता है अपना 4 इयर्स टीनेजर में. ओके, सो लाइफ टाइम इंश्योरेंस भी इधर है. ओके, 48 lakhs का. उसके बाद डेथ कॉम्पनसेशन एंड डिसेबिलिटी कंपनसेशन, वो सारा कंपनसेशन मिलाकर इसमें बहुत ही बड़ा अच्छी तरह इधर यूजुअली समझा गया है जो शिव निधि. ओके, so then after enrollment as a sailor, regular cadet, okay, naval pension regulatory scheme, selection processes is all about shortlisting the candidate according to the mark. उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड, इतर फिजिकल स्टैंडर्ड भी दिया गया है. ठीक है, उसके बाद मेरिट लिस्ट जो भी आएगा इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट्स बिकॉज हाउ एक्चुअली यू आर बिन स्टैंडर्डाइज योर सेल्फ इन qualifying the examination is just because of how you usually prepare for the scheme. ठीक है, तो उन सभी के बारे में भी इसमें बहुत ही अच्छी तरह यूजुअली समझा गया है. ठीक है, सो I hope you have got an idea regarding what actually here it has been mentioned. Okay, so the candidate will be conducted in different centers of examination. medical requirement भी हो सकता है. उसके बाद डिफरेंट स्कीम्स, जेंडर, उसके बाद मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड, उन सभी के बारे में अच्छी तरह यूजुअली समझाया गया है. सो आईसाइट के बारे में भी इसमें दिया गया है. आईसाइट के बारे में यूजुअली दिया गया है 6/6 और 6/9, 6/6 और 6/6 फॉर वुमेन और विथ ग्लासेस एंड विदाउट ग्लासेस. ठीक है, सो ट्रेनिंग ऑफ द कोर्स कमेंस फ्रॉम 2 December 2 इन चिलिका, उड़ीसा में यूजुअली होगा.
Discharge for unsuitable Agniveer are liable to discharge and unsuitable due to unsatisfactory performance at any time during the training or service tenure. ठीक है, वो भी डिस्चार्ज भी क्या करेंगे अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो जस्ट लाइक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सो इसमें यूजुअली दिया गया है कि डिफरेंट कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन, जनरल पब्लिक एज वेल एज ट्रेनिंग कैसे हो सकता है, फिटनेस टेस्ट कैसे हो सकता है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट कैसे हो सकता है, उन सभी के बारे में भी दिया गया है. सो द एंट्री ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैन अप्लाई ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट फ्रॉम जुलाई 25 जुलाई टू 30 जुलाई. ठीक है, इन डेट के बीच में ही आपको अप्लाई करना है. ओनली 5 days लेफ्ट. अगेन एंड अगेन सेइंग, प्लीज़ do the application form. Please fill up the application form as soon as possible, ASAP, so that you will not be getting a delay in your post, which with a very specified call up letter from the center of Indian Navy. So this is all about today's video analysis of the Indian Navy हर काम देश के नाम. So inviting for online application for Agniveer. Okay, so let me end the video here itself. Thank you. So please subscribe the channel.